this year we are basically targeting 301 reforms, which are in 15 reform areas, and the new reforms are 118 reforms in all. So what are the 3 major steps? ये important है, last year जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है. First is you upload the evidence on the EODP portal. This is the first step. Second is uploading. Second step में थोड़ा सा फर्क हुआ है कि आप last time user data हमें email पर भेज रहे थे. इस बार से email छोड़कर आप directly portal पर upload करेंगे data को. आपको हम open करेंगे by end of December और even earlier, so that आप user data जो है आप upload कर सकें. फिर बाद में DPIIT के द्वारा एक user की सर्वे शुरू होगी. तो इसके बारे में पूरा डिटेल नोट DPIIT ने शेयर किया है आपके साथ. मैंने इस प्रेजेंटेशन के साथ अटैच भी किया है. We are attaching this with this presentation so that you can also open it. We'll be sharing it with you in the group also. Second issue is इसके timelines क्या होंगे. Please note, uploading of evidences का deadline December end है. इसमें एक you please try to upload. आज से already पोर्टल खुल गई है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है. यू आर ऑल हैविंग एक्सेस टू यूजर आईडी पासवर्ड. प्लीज फिल अप एंड अपलोड ऑन द पोर्टल एज सून एज पॉसिबल सो दैट हम लोग इमीडिएटली आपको फीडबैक दे सकें, सो दैट यू कैन डू दैट. सेकंड इज यूजर डेटा आपको नवंबर 1 से लेकर मार्च एंड 31 तक आपको यूजर डेटा देना है. वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कीजिएगा. नवंबर 1 से शुरू करके मार्च एंड तक का यूजर डेटा आपको शेयर करें. उसके पहले का डेटा शेयर करने की जरूरत. व्हाट इज द डेडलाइन फॉर अपलोडिंग यूजर डेटा? आपको मार्च में जैसे ही मार्च 31 खत्म होगा, ये पूरा यूजर डेटा जो आपने नवंबर 1 से मार्च 31 का है, उसको आप अपलोड कीजिएगा सिस्टम पर. एंड यूजर सर्वे विल बिगिन इमीडिएटली नेक्स्ट. So this is the broad timeline of this whole process. Ranking का भी बहुत clear है. There will be regional leaders, east, west, north, south and northeast. Area wise, subject wise भी leaders होंगे. Category wise भी लेंगे. Best performing union territory होता है. Best performing state जिसने सबसे ज़्यादा improve किया है. But एक uniform ranking भी होगी. It's not that there will not be a uniform one single ranking for the country, but ये सब awards and other things भी रखेंगे. फर्स्ट स्टेप के बारे में जरा बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप, एज आई सेड, लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग इज 31st. एंड एक्शन पॉइंट्स, यहाँ पर एविडेंस इज नॉट अपलोडेड विल नॉट बी असेस्ड. सो आपको नील मार्क्स मिलेंगे. प्रीवियस रैंकिंग की कोई भी एविडेंस रिटेन नहीं किया है पोर्टल में. इट्स अ फ्रेश पोर्टल. आपको पूरा अपलोड करना पड़ेगा इस ईयर का रिफॉर्म. कुछ डूस एंड डोंट्स हैं. दैट मीन्स आपको करते समय अपलोड वीडियोस और यूजर वॉक थ्रू की किस तरह से आपका सिस्टम काम करता है. आप यूजर मैनुअल को कॉपी दीजिए. गिव अस यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू DPIIT so that we can check the functionality of the system. Scan copies of the document, relevant documents. आप PDF फॉर्मेट में ही, सिर्फ PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे. So please do that. What are the do's and don'ts? The URL link submitted as evidence should be direct to the exact link. पोर्टल में exactly जो आप दिखाना चाहते हैं उसी पर होना चाहिए. Fully operational ICT systems only will be considered. तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके IT सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाए. अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फॉर अ सिंगल रिफॉर्म एक ही PDF में कंबाइन करके आप दिखाएंगे, so that it is easy for us. एक एविडेंस ऑफ वन रिफॉर्म दूसरे एविडेंस रिलेटेड नहीं बताएंगे कि प्लीज रिफर टू रिफॉर्म नंबर 20 और 13. इस तरह से नहीं होगा. आपको डायरेक्ट उस एविडेंस के रिफॉर्म रिलेटेड ही आपको पूरा एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा. एविडेंस शुड बी सबमिटेड ओनली इन इंग्लिश, बिकॉज फिर बाद में वो ट्रांसलेशन के लिए बहुत फिर टाइम वेस्ट होता है आपके लिए भी. प्लीज डू इन इंग्लिश. मैक्सिमम 2 iterations will be allowed. अगर आपको कुछ चेंज करना है तो 2 बार कर सकते हैं. And for each time clarification will be sought by DPIIT. And every time 7 दिन के अंदर आपको response देना है. अगर आप नहीं देंगे तो system will close. We cannot open it. The system is built like that. ये last time के जैसा ही है system, नया नहीं है. But I'm just reiterating the point for everybody's clarity. जब आप reforms upload करेंगे 4 options होंगे. Either वो reform will be accepted because the evidence is adequate, or no, it is not adequate evidence. या NA1 मान के चलेंगे या NA2. ये कॉन्सेप्ट्स आपको लास्ट ईयर के ही हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूंगी सो दैट यू आर क्लियर. व्हाट इज NA1? NA1 इज जहां पर रिफॉर्म जो मेंशन किया है स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान में वो नहीं किया गया है, बट यू हैव डन समथिंग जैसे गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग,
जैसे कोई लाइसेंस है, सपोजिंग रिफॉर्म ये कहता है कि द लाइसेंस शुड बी मेड ऑनलाइन, सपोजिंग ये है, बट आपने अगर लाइसेंस ही निकाल दिया है तो यू विल बी कॉल्ड गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आपने एक तरह से बेहतर कर दिया है, डिक्रीज द रेगुलेटरी बर्डन एंड यू विल गेट फुल स्कोर फॉर इट एंड नो नेसेसिटी टू टेक यूजर फीडबैक। इसमें NA1 माना जाएगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस। NA2 दूसरे टाइप का केस है, यहाँ पर ड्यू टू सम यूनिक रीजन ऑफ योर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूनिक जोग्राफिकल कंडीशन है या आपके यहाँ पर 20 से कम लोग हैं जो एप्लीकेंट्स हैं या यूजर्स हैं, या कोई जजमेंट ऑफ द कोर्ट है ड्यू टू विच यू कैन नॉट डू, दैट मींस रीजंस बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट दैट रिफॉर्म कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन योर स्टेट, इट विल बी कंसीडर्ड NA2। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बट आपको पनिश भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर से भी निकाल दिया जाएगा। तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, हाउ डू यू एक्चुअली इस बार के EODP पोर्टल में लास्ट टाइम से कंपैरिजन में क्या फर्क है? Just let us reiterate some of the things. The EODB portal is being much more user friendly and we'll try our best to make it taking your inputs as we go along. Now state can now submit the reform evidence directly as yes, NA1, NA2, new functionality added for this year's exercise. Then there is also one more functionality, document that date has to be incorporated to keep a log on the when was the uploaded document uploaded in the first place. And we also are asking you to tell us which kind of document. Basically, there is an input template in which some brief details are going to be collected from you about the total reform that is being put. We are also giving you a dialog box next to the document type so that you can explain about the document in the dialog box in case it is already not in the drop down. It is not very important, but we just thought some new functionalities that have come up. These are some details we'll share with you the portal, then you will be able to see. Now, as I had already mentioned regarding second step uploading of user data, I would like to request all the states, because now we are going to do 100% user database. Now there can be 2-3 questions relating to this. If one, the user data of general and specific reforms. We are sharing with you what are general reforms and what are specific reforms. Reforms जो general reforms माने जाते हैं, that means there is no specific user linked to them. We are linking the reforms which will be with which where the users of those reforms will be asked questions about the general reforms. The last year भी यही practice था, इस बार हम आपको upfront बता रहे हैं which are general users and which are specific users. We'll share with you the list and you will be able to understand अगर investment enablers है तो उसका linkage किसके साथ है. तो यू विल नो कि वो यूजर्स को इन्वेस्टमेंट एनेबलर्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट विजार्ड है तो उसके लिए शायद एक डायरेक्ट यूजर नहीं आप पकड़ पाएंगे, बट यूजर ऑफ से सम अदर रिफॉर्म से सिंगल विंडो और समथिंग विल बी यूज्ड. दैट मैपिंग इज बीइंग शेयर्ड विद यू नाउ. You will be able to look at it and accordingly plan. Second is complete user data has to be given. If user data is not completely given, last time I do not want to mention the states. I was also not part of the last year's exercise, so I have no comments per se, but to say that अगर states पूरा user data नहीं देते हैं तो नुकसान उन्हीं को होता है, because you must understand user data complete database देंगे तो you will get a better performance in the state. That is my single point of advice to all the states. Last date for uploading the whole data will be 30th April for November to March के period का. All data will be uploaded directly on the portal. Nothing will be accepted over email. जब आप data दे रहे हो तो please ensure repeat data, duplicate data, incomplete data, irrelevant data. Please do not give. The system will not accept. You will go through unnecessary waste of time. Please ensure the data is correct and it is not. जैसे mobile number पूरा नहीं दिया. Without mobile number and email ID, survey cannot happen. So it is not mere numbers. At the senior most levels, I would request कि आप quality of data को जरूर देखें. Some of the features of the data which I was just telling are given here. You will get reminders and auto alerts to nodal officers. Supposing कोई timeline आपसे छूट रही है तो system आपको अगर आपने mobile number आपका दिया हुआ है तो it will give you an SMS और अगर email दिया है तो SMS alert आएगा. So we are very keen that you are constantly updated so that date आपसे छूट न जाए या कोई आपके यहाँ something is not going wrong. We are connecting with the system in more detailed presentation where we will do with the key people of your teams who are going to use the portal at the cutting edge level. उनको हम एक बार इसका और एक training program देंगे जहाँ पर we'll explain this whole process of uploading of data at the time when it comes. Now we are still 2 months away from this. Then the third step, which is user survey by DPIIT.
Feedback will be conducted in the month of May. Feedback will be taken only of reforms which are implemented and whose evidence is approved by DPIIT. The user feedback will be on multiple counts. We will have a telephone interview, WhatsApp, SMS, email. Therefore, your users will be sent a message over WhatsApp as well as an email with a link embedded in it. The link को click करते ही questionnaire खुलेगा. तो questionnaire में questions specifically पूछे जाएंगे regarding the implementation of the reform, and that will be incorporated. That it will be done in the local language. It will be details of users will be kept anonymous, and whatever submissions which have come from users, as you can understand, cannot be shared with the states because people are always afraid to share about their inputs regarding any state where they are in. So this will be broadly the one. So please, giving correct email ID and mobile numbers is key to the working of this. इस बार हम एक कैंपेन के तौर पर लॉन्च करेंगे सो दैट हर एक को व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा कि प्लीज आप response दे, because response rates tend to be low. You can also ensure that there is awareness in your state for people to respond. The next one is what will be the way user data will be taken. Complete user database is prepared, जैसे मैंने पहले भी बताया था. Not giving complete user database will have been very harmful for the evaluation process. Total 2% of total users will be taken. आपने जितना भी data दिया है उसका 2% users लिया जाएगा. But we will ensure that it will be not below 20 users and not above 100 users. इसके examples के रूप में हमने explain किया है. For example, you have got 10,000 users per a reform. Example. 2% of 10,000 is 200. In such cases, picked up as 100. The sample size 100 ही रहेगा. यहाँ पर एक another example है. यहाँ पर 500 है. वहाँ पे 2% तो 10 ही होगा. But 10 is less than 20, so 20 का sample size लिया जाए. आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि supposing 20 people को call करने पर you don't get reply from 10 people. फिर क्या हम 10 ही लेके चलेंगे? No, we will replace 10. So it will be constantly sample will get replaced. So मैंने पहले जो point बताया था कि आप अगर कम database देंगे तो replacement of user नहीं होगा. And please understand at national level in any survey done, अगर 100 people are called, barely 20 people respond. This is a national average. It is nothing to do with DPIIT or any other. So अगर आप कम देंगे तो आपको replace ही नहीं हो पाएंगे वो users को. So you must give adequate users for this concept where users are replaced. So no user survey if it is taking place, as you know, state UT will not get any marks for the reform as it had happened to many states. So this time this step must be done very carefully. If you have any doubts, you can always ask us and we'd like to clarify. Questionnaire will obviously cannot be shared. These questionnaire will be done, but you can yourself also conduct some of these surveys at your level to understand what is the feedback of the state. State UTs are advised to verify the validity of the data. The points that I said, replacement from the user list, the point that I have. One single user. Last point is important because ये question काफी बार पूछा गया. Supposing I am a user who uses multiple departments के facility, then I will be asked questions for all the other reforms also. That means that single user will be called for 3-4 reforms. But ideally, मैं आपसे request करना चाहूँगी कि user should be independent. That means एक ही user को 4 question पूछना इतना अच्छी बात नहीं है जितना independently for the reform that they have undertaken. So try to send users specific to the reforms rather than one single user being asked multiple questions. So this point in scoring and weightage का एक point था कि कितना weightage होगा. So if supposing in access to information transparency का example, the 3 points to be reforms, there will be 3 marks. In online single window system, there are 11 points. For example, form number 11, if there are 5 points, 5 marks will be given. So marks are linked to the total number of reforms which are included. So please take note of that. Now, what is the total calculation thing? Total feedback of the marks obtained based on user survey plus NA1. As I told you, NA1 is those where you have done government process re-engineering. Then maximum marks minus NA2. Denominator से NA2 निकाल दिया है, so there is no impact of NA2 into 100. This is the whole formula that will be used. And now coming to the critical things, अगर आपके पास if there are 20 users और एक एग्जांपल लेके चलेंगे 100 यूजर्स है आपके वो पर्टिकुलर रिफॉर्म जैसे मैंने बताया, उसमें अगर लेस देन 70 सर्वे रेस्पोंडेंट्स say that the action point is
not been implemented, you will not get marks. Only if you get more than 70% of the survey respondents say that yes, it has been implemented, you get full marks.